In the chapter of organizing, our today's topic is delegation. And this is one of the most important topic as we get caution from this topic of delegation and decentralization in alternative years. We'll get the caution from this. So let us start. First of all, we have to understand the meaning of delegation. Delegation means कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने स्क्रीन पे लिखी नहीं होती हैं. लाइक हमने कल जब पढ़ा था फॉर्मल दिस वन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, उनका भी मीनिंग लिखा हुआ नहीं था. तो मैं जो चीज़ें बोलता हूँ आप नोट डाउन कर लिया करो ना. तो डेलीगेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी विद द immediate subordinate. I repeat, delegation means sharing of the authority with the immediate subordinate. ये होता है डेलीगेशन. अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के, वो तीन हैं: अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स powers to take decisions. Responsibilities means the duties assigned to the subordinate. Accountability means the answerability for performance whatever have been done, whether it has been achieved the target or have not been achieved the target, whether the duty has been performed or not performed. So the answerability for performing or not performing the work, that is called accountability. So these are the three elements of delegation. Then comes the importance of delegation. Importance, need, significance, advantages, anything you can call it to be. So we do have, that is, delegation results in effective management. Wherever we delegate the work to our subordinates, so it results in effective management because the superior will be relieved from the overburden of work and now he can concentrate over the management effectively. Then comes employee development. To whomsoever you have delegated the responsibilities together with certain powers, now this employee will perform that activity and he will get developed. कोई नया तरीके का काम करके उसके skills में improvement होगा. Then comes motivation of employees. Whenever a manager delegates certain task to his subordinate, the subordinate feels motivated कि मेरे superior ने मेरे ऊपर trust करके ये work मुझे allot किया. So it results in motivation of employees. Then comes facilitation of growth. Obviously, wherever the employees development is there, wherever the employees feel motivated, wherever the management is effective, it will obviously result in growth of both, growth of the employees as well as the growth of the organization. Growth means, growth of the employees means the promotion chances, and growth of the organization means expansion in the number of units or number of branches और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एटसेट्रा. तो जहाँ पे आपने किसी को वर्क डेलीगेट किया और उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो फ्यूचर में जब आप प्रमोशन देना चाहेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस पर्सन को हम प्रमोशन दे सकते हैं, ही इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज. तो वो चीज़ आ रहा है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. देन कम्स बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. हम सबको पता है हु कैन डेलीगेट द अथॉरिटीज, हु कैन डेलीगेट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज. ऑब्वियसली अ सुपीरियर कैन डेलीगेट द अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबॉर्डिनेट. ऐसा कभी नहीं होगा कि सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को बोले कि ये काम कर लेना कल. Obviously, the superior will delegate the authorities and responsibilities to the subordinate, and the subordinate will remain accountable to the superior. तो ये जब हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप सेट करते हैं तो इस सिचुएशन में हमारा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की भी डेवलप हो जाता है. हमें पता चल जाता है दैट हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबॉर्डिनेट. एंड लास्टली, इट रिजल्ट्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क एंड operations of the management. So these are the few of the points revealing the importance of delegation. If anybody is having any sort of doubt, any query, you may ask. The next topic comes to be decentralization. Let me recall you the definition of delegation once again. Delegation means sharing of authorities with the immediate subordinate, while decentralization means distribution of decision-making powers. Obviously, authority means the decision-making power. Decentralization means distribution of decision-making powers throughout the organization at different levels. That is called decentralization. तो लिख लेंगे इस definition को आप. Decentralization means distribution of
decision making powers and authorities throughout the organization into different levels, at different levels. So that is decentralization. Or we can say decentralization is an extension of delegation. Delegation means sharing of authority, and decentralization means multiplication of authorities. Delegation involves only two: one superior, one subordinate, immediate superior, subordinate. Decentralization includes all the levels from top to the bottom. So we can say decentralization is a extension of delegation, or we can say delegation is a part of decentralization. कुछ भी कह सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा. Let us take the importance of decentralization. आप लोगों को याद होगा in the principles of management propounded by Henry Fayol, there was one principle called as centralization and decentralization, and there we discussed that is for the small business organizations centralization is better, while for the big business houses decentralization is better. Again, for the routine decisions decentralization is good, but for the major decisions centralization is good. Here we are just continuing द स्टडी पार्ट इन द सेम सीक्वेंस के वहाँ पे हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था उसी को एप्लीकेबल करने के लिए हमने यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में अडॉप्ट किया है. नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वी आर हैविंग. द फर्स्ट वन इज डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स. डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग मैंने जैसे कि आपको बताया, डिफरेंट लेवल्स पे हमने अथॉरिटीज़ दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में, और उनको पूरी ऑटोनॉमी दे दी कि आप इस वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, इस लेवल तक कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. सो इट विल रियली डेवलप द इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स. इनिशिएटिव का मतलब वो अपनी तरफ से भी कुछ एक्शन ले पाएंगे, अपनी तरफ से कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. they will be they need not to ask for each and every decision, for each and every activity to the superior. To a certain level we have provided them the autonomy, तो वो क्या अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले पाएंगे, उनका मॉरल बूस्ट अप होगा. देन सेकंड इंपॉर्टेंस इज डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर. अब किसी भी पर्सन को अगर आप चैलेंजिंग वर्क परफॉर्म करने के लिए कहेंगे तो फ्यूचर के लिए तो उसका टैलेंट डेवलप हो ही रहा है ना. So that is the second importance of decentralization, that it develops the managerial talent for the future. Then comes quick decision making. अगर हम सेंट्रलाइजेशन रखते हैं, हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए हमें सुपीरियर से पूछने की जरूरत है. सो इन मैनी टाइम्स इन द सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसीज इट मे रिजल्ट इन डिलेड डिसीजन मेकिंग. बट वेयर द डिसेंट्रलाइजेशन इज देयर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की या मेरे डिपार्टमेंट की या फिर मेरे ब्रांच की पूरी अथॉरिटी, पूरी ऑटोनॉमी मेरे पास में है. आई विल टेक द डिसीजन क्विकली, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मुझे. सो दिस इज वन थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इट रिजल्ट्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग. ओके, किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. No, sir. No, sir. And three more importance of decentralization are here. First one, relief to the top management. Obviously, where the some of the responsibilities have been transferred, हम decentralization के लिए transfer word भी use कर सकते हैं. Where some of the responsibilities have been transferred or distributed throughout the organization, now the top level management will be able to concentrate over certain external dealings, over the external environment. Otherwise the top level management will remain occupied in the daily routine job. So decentralization helps the top management to get relieved from the overburden of work. Then comes facilitates the growth of what? Growth of the organization as well as growth of the employees. How the employees will be result in the employees will be developed and growth. All the employees who are performing the challenging task allotted by their superior and are performing well, they will get the chances of promotion. So it will facilitate their growth, and the organization will also grow as the work have been distributed throughout the organization. So now the top level management will think over the expansion of the organization, think over the diversification of the organization. So it will result in growth of the organization also. And lastly, the better control, because the autonomy to take decision is there, because quick decision making is there. So it will result in a better control in the organization of every superior over his subordinates. So these are the 6 points of importance,
6 points revealing the importance of decentralization. I hope you all have understood it clearly. If anybody would like to ask any query, any doubt, may ask. And together with this, the chapter of organizing also gets over. Tomorrow we are gonna continue with or start with the chapter of staffing as the revision. तो उम्मीद करता हूँ जो जो टॉपिक्स मैं डेली के आपको डिस्कस करवा रहा हूँ उन्हें आप आफ्टर द क्लास भी पढ़ते होंगे दोबारा से अपनी रेफरेंस बुक से, अपनी एनसीईआरटी की बुक से, और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में उसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.